Hello everyone, this is Dinesh Sharma from Raise the Bar with DS, and today the topic that we are going to discuss is called narration in English grammar. English grammar, when it comes to English grammar, there are 4 or 5 topics that you must know predominantly. One is tenses, second is narration, third is active voice, passive voice, and fourth one is articles or determiners and parts of speech. So today our topic is narration, and narration is in our life at some phase we all do some kind of narration. We all tell some stories. We all relate some incidents or record some events, or we report something to other. हम सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी चुगली कर रखी है, शिकायतें कर रखी है, या किसी की बात को रिकॉर्ड किया है या रिपीट करके बोला है. रिकॉर्ड करके या रिपीट करके बोला है हम सभी ने. ठीक है, तो उस रिपीट करने को, रिकॉर्ड करने को ही नरेशन बोलते हैं. कहानी कहने को नरेशन कहते हैं. आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें शुरुआत से कोई कैरेक्टर बोल रहा होता है, वॉइस ओवर चल रहा होता है, पूरी कहानी को बोल रहा होता है. बेस्ट एग्जांपल आप सभी को याद रहेगा तो वो है 3 इडियट्स का, जिसमें जो आर माधवन वाला कैरेक्टर जो होता है वो पूरी कहानी कह रहा होता है. एंड दिस इज कॉल्ड नरेशन. So in English grammar there are 2 kinds of narration, direct narration and indirect narration. So first let's take what direct narration is. Direct narration lies in reporting the words of a speaker without making any changes. So the direct narration is a style of speaking where you don't take any responsibility on you, and you just quote the words of the speaker as it is without making any changes, and you also quote them in the quotation marks, quote unquote. So direct narration is a style of speaking where you put all the words of the speaker verbatim, word for word, without making any changes. Okay, it means you quote the words as it is and you place them in inverted comma marks. Fine. So in English grammar you will see many statements are in quotation marks. He said, comma, quotation mark, and then. So there are examples of direct narration. Look at these examples. My father says to me, comma, inverted comma, you have to learn some manners. Fine. Let's take some more examples of this. He says to her brother, somebody called to talk to him. Yes. Fine. You have to learn some manners. He says to her brothers, he says to his brother, should be there. His brother, somebody called to talk to you. Let's take one more example. My friend said the movie was interesting. Look at these 3 sentences. You will see that these 3 sentences are divided into 2 parts. Okay. So in direct narration, the sentence is divided into 2 parts. First one, the outside part, which is generally known as reporting speech. Second, the verb
in this part is called reporting verb. The tense and pronouns of this part never change. The verb changes, the reporting verb changes, as follows. Say, says, no change. Say, says to, tells. Said, no change. Said to, told. So far so good. Is there any confusion so far? Is there any doubt? Is there any doubt? Is there reporting verb, this one. Okay. See this. See the examples. These are examples. Says to me, says to is a reporting verb. Says to is reporting verb. Said is reporting verb. Okay. So fine. Is that clear? So we have done so far direct speech, direct narration, and the outer part, which is called reporting speech. Yes, is that clear so far? All fine. कोई डाउट है किसी रहेगा तो बताएं. Sentence is divided into two parts. We are doing the outside part yet. We are still doing the outside part. We have not done the second part, inside part. Because you have to clear the terms in systematic. You have to break the sentence into parts. Only then you can do all the sentences correctly in narration. Fine. So the rule says outside part, which is generally known as the reporting part. The outside part is called reporting speech. The verb is in this part is called reporting verb. The tense and pronouns of this part never change. The reporting verb changes as follows. Say, says to. Okay, fine. So far so good. We have done this much. Let's go ahead. Outside part is called the same thing is repeated here again. Outside part is called reporting speech, and the verb in this part is called reporting verb. Inside the quotation mark part is called reported speech. And the second part, yes please, the second part that lies within quotation marks is called reported speech. Reported speech is an object to reporting verb.
we make changes regarding tense and pronouns, regarding pronouns, tense and adverbs when we change the narration from direct to indirect. What I mean here is the second part that lies within the quotation marks or inverted comma, or you can say quote unquote marks, is called reported speech. Second, the reported speech is an object to reporting verb. Says to, said to, asked, directed, said, whatever verb is there. Report the quotation mark part is in the objective case of the reporting verb. Fine. We make in the reporting verb we make changes regarding tense, pronouns and adverbs when we change the narration from direct to indirect. So their sentence is divided into two parts: direct reporting speech and reported speech. Reporting speech and reported speech. Reporting speech is the outside part that doesn't have any comma, and reported speech is the part which is in the quotation marks, mean which is to be quoted, which has been quoted and which is to be repeated to some other people. Is it clear so far? Good. So now let's take the definition of narration. Narration simply means reporting or recording. Narration simply means reporting or recording or retelling of previously stated words or sentences or statement by making certain temporal tense related changes, structural, pronouns or verb related changes. Fine. There are two ways of narrating: direct narration and indirect narration. In direct narration, we have two division of a sentence. First one lies out of the quotation marks, and the second one lies inside the quotation marks. The teacher says to his students, "I will teach clauses tomorrow." The red font sentence is reported speech. My father says to me, "I need some rest." The red font is reported speech. So do you have a sentence which is divided into two parts with the comma or inverted commas? So this method, way or style of reporting is called direct narration. When you quote the words of speaker without making any changes, it is called direct narration. And why most of the people prefer direct narration? Because they don't want to take up any responsibility of the statements. In today's time, many statements create controversies. So people just use direct speech to quote statements, so as the responsibility of the statement is not to be imposed upon them. Fine. In direct narration speech, we don't make any changes in the statement to be recorded or narrated or retold. The part that lies outside the inverted comma is called reporting speech, and the verb in this part is called reporting verb. The part lying inside the inverted comma is called reported speech. Indirect narration. So this is all about direct narration so far. This is all about direct narration so far. I hope you got a gist about direct narration so far. Now we come to indirect narration. Indirect narration is a way of retelling, is a way of re-recording, is a way of reporting a statement or a sentence or a declaration or yes. Okay. Indirect narration is a way of recording, retelling or reporting the previously said statement by making certain changes related with tense, related with pronouns and adverbs, if any. Yes, ma'am. Yes.
Is there anybody who is saying something? Who's asking? Who's saying or asking? Have a doubt? Fine. So indirect narration, when you indirect narration happens when you make changes. When you make changes in the direct quote, in the quotation, and the already said words. Fine. So when you record, report or retell, when you record, report or retell the previously stated statement after making necessary changes pertaining to tense, pronoun and pronouns. This style, way or method of retelling is called indirect narration. And this is what we need to become a storyteller. Storyteller changes stories, changes the narration of the story as per their need of circumstances. When changing narration from direct to indirect, now we come to the point where we will change the narration from direct to indirect. So before I go further, please give me confirmation if you got it or not, if you got it or not. Fine. So can anyone repeat so far what I've done, what I've got? Gaurav. Gaurav, can you repeat? Yes, Gaurav. बताओ क्या क्या बताया अब तक? तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है बेटा? ना और इनडायरेक्ट ठीक है ठीक है. When changing direction from direct to indirect, we need to be very much careful of the rules of transformation. ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बदलते हैं तो we need to be very much careful about the rules. What are the rules? Please be careful. See these rules. We never change the tense and pronouns of the reporting speech, the outside part. First rule is we never change the tense and pronouns of the reporting speech. बाहर वाले भाग जो outside part है उसको reporting speech बोलते हैं, उसका tense और pronoun कभी नहीं बदलते. When the reporting speech is in present tense or future tense, we don't make any changes in the tense of the reported speech. अगर बाहर वाला भाग का tense present या future tense तो उसका tense भी कभी नहीं बदलेगा. When changing from direct narration to indirect narration, the first act we need to do or perform is to remove the inverted comma or comma. For that we need an adequate conjunction or connector. When changing from direct narration to indirect narration, the first act we need to do or perform is to remove the inverted comma or comma. For that we need an adequate conjunction or connector. Mostly in simple sentences the connector is that. सबसे पहला एक्ट जो हम करते हैं, सबसे पहले एक्टिविटी जो हम करते हैं टेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलने से पहले, वो है कि हम लोग कॉमा हटाते हैं. जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगा होता है उसको हटाना होता है हमको, और उसको उनकी जगह पर वो कंजंक्शन और कनेक्टर चाहिए होता है जो कि मोस्टली सिंपल सेंटेंस दैट होता है. ठीक है. After applying connector, the second change that we make is pronoun change. कनेक्टर लगाने के बाद में जो सेकंड चेंज हम करते हैं वो है प्रोनाउन बदलना, मतलब अंदर वाले भाग के प्रोनाउन बदलना. जैसे मैंने पहले बोला कि बाहर वाले भाग के रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउंस कभी नहीं बदलते. You need to be very much careful about changing pronouns, because sometimes people change the pronouns of the outer part as well, but the reporting speech pronouns never change, and we need to make changes in the pronouns of the inside part.
After applying character, the second change that we make is pronouns change. We never change the pronouns of the reporting speech, but the pronouns of the reporting speech are changed as per the subject and object of the reporting speech. हम रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउंस कभी नहीं बदलते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस जो हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं. ठीक है, इस रूल को ध्यान से देखिएगा. बाहर वाले भाग के तो प्रोनाउंस कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अंदर वाले के जो प्रोनाउन होंगे वो बाहर वाले के प्रोनाउंस देख के बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख के बदलेंगे. टेंस तो टेंस का अभी बाद में बताऊंगा बेटा, अभी पहले ही देख लीजिए थोड़ा. पहले प्रोनाउंस चेंज देखिए. अभी मतलब मैं कह रहा हूँ कि बाहर वाले भाग के प्रोनाउन कभी नहीं बदलते. ठीक है, लेकिन अंदर वाला जो भाग है रिपोर्टेड स्पीच को, जो कि आपका रिपोर्टेड स्पीच है, उसके प्रोनाउन बाहर वाले भाग के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बदलेंगे. ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो जब अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच पे जब फर्स्ट पर्सन होता है वो बाहर वाले के सब्जेक्ट से बदलेगा. व्हेन देयर इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच, वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन will go as per the subject of the reporting speech. Second person pronoun will change as per the object of the reporting speech. और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन no change. Reporting verb changes as following: says or say or says, no change. Say to or says to, tell or tells, said, no change. Said to, told. These are certain changes that you will do. अभी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा. क्या the teacher says to his students, I will teach clauses tomorrow. The teacher सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है. पहले तो आप सब ये पता लगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. द टीचर सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, और आई विल चेंज. ठीक है, तो द टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट्स दैट, आपने कॉमा हटाया, दैट लगाया. ही शी, आई सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट में बदलेगा तो टीचर सब्जेक्ट है आपका और ही शी हो जाएगा. आई विल चेंज इनटू ही और शी will teach clauses the next day. My father says to me, I need some rest. My father tells me that he needs some rest. The girl says, you can't stand in front of me. The girl says to me, to him, to you. Here you can assume some dummy object that you, he, I can't stand in front of her. She says to her mother, I am grown up now and can better take care of myself. She tells her mother that she is grown up now and can better take care of herself. Her brother says to her, you have to obey your teachers. Her brother tells her that she has to obey her teachers. The principal says to all the students, from tomorrow we all are going to meet at school as the schools are opening. From tomorrow we all are going to meet at the school as the school are opening tomorrow. The principal tells all the students that from the next day they all are going to meet at school as the schools are opening. ठीक है, now next one. Ritu says to Reena, you don't have to follow Ravi as I love him. Ritu tells Reena that she doesn't have to follow Ravi as she loves him. Ram says to Lakshman, Bharat is my dear loving brother like you. Ram tells Lakshman that Bharat is his dear loving brother like him. So these are the examples of reported change of direct indirect narration in present simple tense.
कोई डाउट सो फार? प्लीज 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 पूछिए। जी 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 योर टीचर्स पूरा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, ये पॉइंट है। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन है यू एंड योर्स, यू एंड योर, है ना? यू एंड योर प्रोनाउन है, यू हैव टू ओबे योर टीचर्स। यू एंड योर बोथ आर सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटर पार्ट। आउटर पार्ट का ऑब्जेक्ट हर है ना, तो हर के हिसाब से बदलेगा बेटा। पहले शी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्ट केस में हर हो जाएगा बेटा, है ना? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये रूल है बेटा। गुड। और बताएं। गौरव और दीपांशु समझ में आ रहा है बेटा? हाँ बेटा, वी है ना, वी। एग्जैक्टली। हाँ, गौरव सही हुआ, चेंज होगा ना। तो प्रिंसिपल सिंगुलर है और वी प्लूरल है, तो फिर प्रिंसिपल का सिंगुलर ही होगा, लेकिन उसको प्लूरल में कन्वर्ट करोगे तो दे मिलेगा ना आपको। प्रिंसिपल के लिए ही प्रोनाउन आएगा और आपका वहां पर अंदर सब्जेक्ट वी है, वी प्लूरल है, वी ऑल है ना, वी ऑल। तो वी और प्रिंसिपल सिंगुलर है आपका, तो ही का प्लूरल क्या होता है? दे होता है ना। तो दे ऑल आर गोइंग टू मीट एट द स्कूल, मतलब इसमें दे में प्रिंसिपल भी इंक्लूड है बेटा, क्योंकि यू तो तुम तो किसी और को रिपोर्ट कर रहे हो ना, तुम तो किसी और को रिपोर्ट कर रहे हो ना, है ना? यही तो वीडियो है इस डायरेक्ट की। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। इतना समझिए अभी आज, ज़्यादा खिचड़ी बनाइए। एक बार फिर से मेरे को कोई रिवाइज करके बताइए कि क्या होता है, क्या मतलब ये टॉपिक में क्या है, क्योंकि मेरे को लगता है चले गए कुछ लोग, अच्छे चले गए हैं जो नए जुड़े थे, जो दीक्षा और अंजलि। ओके, कोई बात नहीं। हाँ बताइए क्या होता है भाई, कौन बताएगा ये नरेशन क्या होता है? हाँ बोलना, लेकिन क्या बोलना? जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मैं कल आपको आगे नरेशन का आगे का पढ़ाऊंगा, नरेशन का टॉपिक फिनिश करेंगे कल हम, है ना? हम कल नरेशन का टॉपिक फिनिश करेंगे, ये मेरा स्टेटमेंट है आपको, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला द टीचर सेज टू यू, आप है we tomorrow we shall finish the topic of narration। तो अब इस बात को आपको किसी और को बोलना है तो क्या तरीका है उससे दोनों?
अब मान लो यही बात आप मोनिका को बता रहे हो तो कैसे बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मोनिका को बताने के दो तरीके होंगे ना आपके, ये मेरे स्टेटमेंट को बताने के। हाँ एक तो एक नहीं, की लगाया तो आपने इनडायरेक्ट कर दिया, की लगाते इनडायरेक्ट कर दिया। सर ने कहा है, सर ने कहा। हाँ बस बस बस, ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर आपने बोला कि सर ने कहा था कि कल हम ये टॉपिक, हाँ ये डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो नरेशन मतलब किसी को कहीं कहीं बात को दोहराना, किसी की कई बात को दोहराना। तो दोहराने के दो तरीके दो तरीके। तो डायरेक्ट बोल दो बिल्कुल कॉमा लगा के, ताकि आप पे जिम्मेदारी नहीं आए, है ना। ठीक है कि भाई देखो आज का टाइम बहुत कंट्रोवर्सी का टाइम है, आज हजार ऐसी बात पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, ना जाने कौन कब किस बात को बुरा मान जाए। ठीक है तो इसलिए लोग इनडायरेक्ट नरेशन बच रहे हैं आजकल, कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था, उस किताब में ऐसा लिखा है, रिसर्च जब करते हैं प्लीज। हाँ एग्जैक्टली टेप रिकॉर्डर की तरह बिल्कुल, है ना। रिकॉर्डिंग स्पीड और रिपोर्टिंग स्पीड बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग स्पीड जो है, ठीक है, समझ रहे ना। तो नरेशन वही स्टाइल है। और नरेशन देखो आप है ना, देखो जैसे इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में हो ना, तो आप बहुत सारे नॉवेल्स देखिए, जिसमें नॉवेल्स में नरेशन होता है, बहुत लंबा नरेशन चलता है, कहानी चलती है, आप बता रहे होते हैं किसी को। कई आजकल की हमारी मूवीज भी इस तरह की आती है, इसमें एक बहुत वॉइस ओवर चलता रहता है, वो कहानी बताता रहता है, आप सुनते आप देखते रहते हो कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ। दिस इज कॉल्ड नरेशन, दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। और ये एक बहुत अच्छी स्किल भी है, बहुत अच्छा मतलब इसका स्कोप है आज के टाइम में। कई अधिकतर आप आज थोड़ा सा भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन होंगे ना, तो आपको मैक्सिमम जो एड्स मिलेंगे एडवर्टाइजमेंट, वो मोटिवेशनल ट्रेनर्स के मिलेंगे, मोटिवेशनल ट्रेनर्स के, स्पीकर्स के मिलेंगे, जो सबको मोटिवेट कर, संदीप माहेश्वरी होगा, या कोई बजाज है, या कोई टोनी रॉबिन्स है, या डीन रेजियोसी है, या माइंड वैली है, इनके मिलेंगे। और इन सब का सारा खेल है कि स्टोरी सुना के लोगों को पॉजिटिव फील कराना। तो यार किसी की लाइफ में कुछ परेशानी है तो उनको स्टोरी बताओ कि भाई सचिन तेंदुलकर ने ऐसा किया, उसके टाइम पे भी प्रॉब्लम आई थी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा था। मार्टिन लूथर किंग सेज दैट, बराक ओबामा सेड दैट, स्टीवन मार्कोवी सेड दैट। तो ये सारे नरेशन है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, आप एज इट इज कोटेशन मार्क लगा के, मेरी बात नहीं है, उसने ऐसा कहा था, कोटेशन मार्क, है ना, फिर लगा बोल दिया। So this is called direct narration when you use the exact words of the speaker, and indirect narration occurs when you make changes in the statement, है ना। फिर जब मीडिया वाले मॉडिफाई करते थे स्टेटमेंट को, है ना, उसको इनडायरेक्ट नरेशन और बोलते हैं मैनिपुलेशन बोलते हैं उसको, कि भाई किसी की कही हुई बात को कुछ और दिखा देना। मैनिपुलेशन मतलब बहलाना, फुसलाना, या ऐसा कर देना थोड़ा, हाँ मैनिपुलेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन में ही सब कुछ पॉसिबल है। नरेशन मतलब इंग्लिश अगर आप सीख रहे हो और कम्युनिकेशन में आते हो तो नरेशन सब कुछ है। क्योंकि आप अगर कभी जैसे मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, किसी क्लाइंट से मिलने जाते हो, तो उसको भी आपको पूरी कहानी सुनानी पड़ती है कि देखिए आपकी ये प्रॉब्लम आएगा, हमको ये करना है, तो सारा ये आपको। और नरेशन में क्या होता है, सेंटेंस आपका लंबा होता है बेटा। कल तक अपन जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस, आई एम जॉन, आई लिव इन हियर, आई हैव 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, ऐसे सेंटेंस थे हमारे। लेकिन नरेशन का सेंटेंस लंबा होता है आपका। आप स्मॉल सेंटेंसेस यू कैन स्पीक इन अ चंक, मतलब एक ही बाइट में बोल सकते हो, लेकिन नरेशन लंबे सेंटेंस बोलने में उनको टाइम लग जाता है। then we come to the rules of punctuation की, कब वो कॉमा देखने पड़ते हैं, कोलोन देखना पड़ता है, फुल स्टॉप देखना पड़ता है, और इन सब का भी रूल्स भी वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो this is the topic of narration that we have done up to present simple tense। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल तक किया है, अभी अपन पास्ट में नहीं आए बेटा। अभी अपन ने सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में कनेक्टर लगाना सीखा है और प्रोनाउंस चेंज करना सीखा है। अभी हमने टेंस बदलना नहीं सीखा है।
क्योंकि टॉपिक को स्लो ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पूरा टॉपिक कर दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। ठीक है, तो आई होप कि यू रिमेंबर इट, यू कीप इन माइंड एंड यू डोंट फॉरगेट इट। गौरव, दीपांशु, कोई डाउट है? दीपांशु तो बताओ। अच्छा गौरव, कोई डाउट है? नहीं तो पूछूंगा तो बताना बेटा यार थोड़ा, है ना। ठीक है, सही है। तो देखो सीधी सी बात समझो यार, तो क्या कई किसी की कही हुई बात को एज इट इज बोल देना डायरेक्ट नरेशन, और किसी कही हुई बात को समय टेंस और प्रोनाउंस बदल के बोलना इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस दो हिस्सों में बटा होता है, बाहर वाला भाग, अंदर वाला भाग। सिंपली आप ऐसे कर लो, आप इसको सीखने के लिए आपको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं बनना है, आपको अपन कुछ चीज़ें समझनी है। उसका तरीका यही है कि भाई बाहर वाला भाग, अंदर वाला भाग, बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच। अंदर वाला भाग बाहर वाले भाग का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बाहर वाले भाग के प्रोनाउंस कभी नहीं बदलते, बाहर वाले भाग का टेंस कभी नहीं बदलता, और बाहर वाले भाग की वर्ब ऐसे बदलती है। सेज टू का नो चेंज, सेज टू का टेंस हो जाएगा, सेड का नो चेंज, सेड का टोल हो जाएगा। ये सारा है। ठीक है, चलिए ये तो अपन मैं आज को अभी यहीं तक ही रख रहा हूँ। थोड़ा आप देखिएगा इसको, एक बार रिवर्स कीजिएगा। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूँ एक बार लगे आपको। तो क्या हो गया गौरव, तुम्हारी मेल आईडी क्या है? गौरव, रुको, गौरव गर्ग 68644 और दीपांशु शेयर है। ठीक है, ठीक है, ये लो आपके पास ये वाली फाइल भी आ गई। ठीक है ना, तो इस फाइल को अभी थोड़ा यहाँ तक लेके एक बार रिवाइज करो, फिर अपन सेंटेंसेस लेके एक्सरसाइज करेंगे इस पर काफ़ी। ऐसे आपको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आपको आ जाएगा, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है। बट यहाँ पर एक फ़ायदा आपको होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी बोलने की और समझने की। और आज 21st सेंचुरी में स्पीड इज एवरीथिंग। वो तो दीपावली ठीक है। आप देखो मालूम, अब मैं तुमको सेंटेंस सॉल्व करने के लिए दूँ, कर दोगे? नहीं अभी तो रहने दो, खैर मैं अब आपको एक दूसरी फाइल पे ले जाता हूँ मैं।
देखिए यहाँ पर एक फाइल आपके सामने दिख रही होगी आपको। इस फाइल में सारे सेंटेंस बड़े बड़े सेंटेंस है।